रखी हुई है बस जज़ाकल्लाह। ये जो है या मैसेज होता है ना इससे। हाँ हो जाता है। कैसा भी आईफोन बड़ी टेबल का वो कवर किधर है, वो ढूंढने जरा। वो टेबल के ऊपर जो रख लगाते हैं टेबल क्लॉथ यार, वो जो टेबल हेड टेबल नहीं होता, किधर है देखें किधर। ये वालेकुम सलाम। लाइव जाए हाँ चेक कर लो। मंसूर ओपन इन यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। किधर में चेक कर लो, मैंने कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी मैं भेजता हूँ, भेज पाए लड़के को बेसमेंट में है। मोटर साहब है ठीक है, आ रहे हैं वो भी पीछे सेट। I have no idea. आ रही लेट आ रही है। वो तो लेट ही आएगी। नहीं चेयर्स करो, चेयर्स 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 लगा दो। कुरान का क्या हो मिल गया? कुरान कौन देता है? कुरान का क्या हो गया? नीचे करो बेटा। कुरान का क्या हो गया? कैसा भी यहाँ पे कोई चीज पकड़ाई है। नीचे करो। ठीक है इतना। ये आवाज इसकी नहीं होगी। नीचे करो। ये दूर क्या ना आप दूसरे वाले कितनी बैटरी नहीं है। बंद करो इसको, इसी में करो। हाँ ठीक है। वो मेरा चैनल चल रहा था। सही आ रहा है। इधर भी नहीं है बड़ी कम लाइव है। वो पिंक सा रहेगा। जूम इन करो रखो। ऐसा नजर प्रिंट की वो लिख रहा है इधर राइट पे करो तुम इधर। थोड़ा सा जूम आउट कर हल्का सा भाई तो कोई भी रंग का होगा जल्दी किधर भी है इंग्लिश ट्रांसलेशन तो हम लोग ना पता लग जाएगा इधर करना है ना राइट साइड पे। थोड़ा सा ठीक ठीक यहाँ पे टेबल वगैरह नहीं मुझे प्रेजेंटेशन करनी है कैसे वो पहले तो मैं साथ में रिकॉर्ड में सेटअप किया लेकिन वो आई नहीं अभी तक।
अच्छा वो जो है हाँ जी ओके है ये वो मैंने देखेंगे जी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा hayya ala-s-salah hayya ala-s-salah hayya ala-al-falah hayya ala-al-falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah
ये देख लीजिए कि ये लगा लो प्रोजेक्ट स्टार्ट चेक कर लेते हैं नमाज के बाद Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله What happened though? I can't say. I'm scared of becoming Yeah, sure. a moment. So, your movies are in
Okay.
I don't know when. Yeah, I'm not sure. Not कलर आया कैसे मैं उनको पूछना वाले वाले ने दिखा मैं भेज रहा सर जी हाँ जी सर से आप बोल सर मेरी गाड़ी में पड़ी है एक चाहिए वो अदील के पास गाड़ी से टोपी ले पेंसिलें सिर्फ चाहिए फ्रूट मुझे तीनों में दे दो के तीसरा I'm sorry. You ready? गाने सुन तो ठीक है जेरी कितने 5 है पहले 5 हाँ जेरी इधर प्रास सतीश कर शो करने का प्रेजेंटेशन नहीं शो करने का इधर करेंगे शो प्रोजेक्ट वो उधर लेकिन इधर मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया वो अच्छा वो भी मैंने कर लिया कान खोल चेक करें जूम आउट पैन अप बस बस थोड़ा और बाइक पूरा ही बाइक और
तेन कहना कहीं नहीं बैठे अच्छा ये तो फिर ठीक है अच्छा चलो ठीक है क्या चले Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will start today's Tarbiyat Night. And we will have the recitation from the Holy Quran by Hafiz Absar Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فاحذروا وإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. The translation by Adil Ahmed Sahib. Now we present the Urdu translation of verses 91 to 93 of Surah Maida. वो लोगों जो ईमान लाए हो यकीनन मदहोश करने वाली चीज़ और जुआ और बुत परस्ती और तीरों से किस्मत आजमाई ये सब नापाक शैतानी अमल हैं बस इनसे पूरी तरह बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे और तुम्हें ज़िक्र इलाही और नमाज से बाज रखे तो क्या तुम बाज आ जाने वाले हो और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और बुराई से बचते रहो और अगर तुम पीठ फेर जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ वाज़े पैगाम पहुंचाना है. English translation by Jurullah Sayyid Sahib. I will now present the English translation of Surah Maida, verses 91 to 93. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. O ye who believe, wine and the game of hazard and idols of divining arrows are only an abomination of Satan's handiwork. So shun each one of them, that you may prosper. Satan desires only to create enmity and hatred among you by means of wine and the game of hazard.
and to keep you back from the will of remembrance of Allah and from prayer. But will you keep back? And obey Allah and obey the Messenger, and be on your guard. But if you turn away, then know that on our Messenger lies only the clear conveyance of the message. Nazm by Danish Bhatt Sahib. नूने हालान जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम ना हो, पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम ना हो। चाहता हूँ कि करूँ चंद निसाएं तुमको, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम ना हो, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम ना हो। जब गुजर जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा सब बार, सुस्तियाँ करके करो ताले बेआराम ना हो, सुस्तियाँ करके करो ताले बेआराम ना हो। खिदमत दीन को एक फज़ल इलाही जानो, इसके बदले में कभी ताले बेआनाम ना हो, इसके बदले में कभी ताले बेआराम ना हो। दिल में हो सोच अगर तो आँखों से रवा हो आंसू, तुम में इस्लाम का हो ज़फ़क़त नाम ना हो, नूने हालान जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम ना हो। Master,
दो कुर्सियाँ इधर और लेके आइएगा। जी। एक तो जो हमारे को दूसरा मैं कहा हूँ प्रेजेंटर जो है, अच्छा तो दूसरा और रीजनल का अपना we also have a member of national on that, so we should also tell him all. That's it. The English translation will be done by Fraz Ahmed Sahib. I will now present the English translation of the Qatla's Sister, a poem by Hazrat Muslim Maud. Oh, ye tender plants of the nation, to you I have something to say, providing my message may flash not away. Advice I would give to the nation's youth, that they may not say, I withheld the truth. When we pass away, the burdens of life you will have to bear. So be not seekers of idle rest, but do and dare. Serve the faith with the heart, filled with God's sweet grace, and let not a thought of compensation cloud your face. Let your eyes fill with tears, and your hearts burn with love. Let your spirit ascend beyond Islam's mere name to the realms above. Jazakallah. We will now have the presentation by Qudus Sahib. Pura naam kya hai? Abdul Qudus Sahib, who is the police officer in Pure Region Police. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So please keep in mind that if there questions there are, you can write them down. There are papers and pencil that will go around. So if you want to ask any question anonymously, you can do that without writing your name, and we will have a Q&A session in the end. Whether it's on Qadusa's presentation or my presentation or Nursa's presentation, any question that you have, you can write them down, and we will take all those questions in the end. My name is Abdul Qudus, and I've been with Pure Regional Police for a year and a half. And today my presentation will be about drugs, which is very common nowadays in our youth, especially in our Jamaat and non-Ahmadis as well. I'm just waiting for the presentation to be on. What's some HTML like this? So how many of you wanted to join the police force? Anyone? कोई भी नहीं है? No one from here? Okay. Maybe tell him how you can join the police force. Well, it's a very long process, and it's very tough too. Don't scare them. No, just like you need to have lots of patience and you have to be dedicated. Like lots of people will tell you that it's very easy to become a police officer. It's not. Like for me, it was a year and a half, and you have to work hard. Lots of volunteer hours. Education is very important as well, and especially with Peel, they look at your volunteer hours. For me, I use Jamaat as my volunteer reference, and I didn't volunteer anywhere else. And I did it for like 4 years with Humanity First, so they never asked me a single question about my volunteers experience. How much did you get paid for? How much Take that. How much is salary for salary? starting salary for? So starting salary is when you're in training, you're getting paid. So first 2 months you'll be sorry, not first 2 months. First 6 months is $55,000, and then it goes up by $10,000 every year. It goes up to $100,000. But there's lots of overtime. Like I said, I get overtime and everything. You work for 4 days and you're off for 4 days.
and it's different with every police service, working days, but the pay is almost the same. I think Usab, they're having some difficulties with the setup, so Usab will do a presentation and then we'll call you up later. Oh. Is that fine? Yeah, that's okay. I think maybe you should try with Rabi, huh? वहाँ के साथ को शुरू हो जाएगा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जो आज का मजमून मुझे कहा गया कि मैं उस हवाले से कुछ जो है बातें अब आपके सामने बयान कर दूँ, खासतौर से वो वालिदैन से मुतल्लिक है कि बच्चों की परवरिश के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो उस सिमन में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिन, तो तमाम जो बच्चे हैं वो फितरत सहिया पर पैदा हुए कि every child is born with the true nature. He is not a sinner, and also later when in the life after he'll be dealt with whatever he has done in his youth or in his age, where he would come to know what is sin and what is evil or what are the vices. इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक बच्चा जो है वो सही फितरत पर पैदा होता है। आगे बयान किया कि वालिदैन हैं जो किसी को मसीह बनाता है, मसीही बनाता है, यानी कि उसको ईसाई बनाता है, कोई उसको यहूदी बनाता है, और कोई फरमाया कि उसको जो है साबी बनाता है, और इसी तरह बताया कि आगे इस्लाम भी जो है कि जो मुसलमान हैं वो अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम देते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में ये चीज़ हमारे सामने आ गई कि ये वालिदैन की ड्यूटी है कि जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे को पैदा किया है, तो वो सबसे पहले उसके लिए बतौर रहनुमा है और बतौर गाइड के जो है वो बताया कि वो वालिदैन है, ना कि कोई और। बाज़ वालिदैन कह देते हैं कि जमात की जो है जमात को चाहिए कि हमारे बच्चों की तरबियत करे, जमात जो हमारे बच्चों की तालीम की तरफ जो है वो रुझान दे और उसकी तरफ जो है तवज्जो दे। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो है वालिदैन के बारे में फरमाया और उनको ताकीद की कि वो सबसे पहले अपने बच्चों की परवरिश करने वाले हैं। ऐसे ही है जैसे एक मुर्गी है, बच्चे पैदा होते हैं, अंडे से निकलते हैं, उसके बाद वो हमेशा उन बच्चों को अपने जो है वो अपने पास रखती है, अपनी हिफाजत में रखती है। बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको वो जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, जिस तरह से भी कि जो तालीम और तरबियत का म्यार है पहले वो जो है वालिदैन सिखाते हैं, और बाद में फिर उसको जो परवान चढ़ाना है, उसको जो पॉलिश करना है, फिर वो जमात का काम है। फिर वो मज़हब जो है उसको उस तरफ जो है राह रास्त की तरफ जो ले जाता है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरमाया कि अपने बच्चों की इज़्ज़त करो, सबसे अहम चीज़। और किसी मज़हब में भी ये तालीम नहीं दी गई, किसी भी जो पिछले सहीफ़े जो आज की शक्ल में जिस शक्ल में हमें मिलते हैं, किसी ऐसे सहीफ़े में भी ये बात नहीं है कि बच्चों की जो है वो फरमाया कि इज़्ज़त करो। कितना खूबसूरत पहलू है, और यही वो ख़ास बात है कि जो हम देखते हैं कि नहीं पाई जाती आज के माशरे में, कि अनफॉर्चुनेटली वालिदैन जो है बच्चों की इज़्ज़त नहीं करते। और जब बच्चों की इज़्ज़त नहीं कर रहे तो ज़ाहिरी बात है कि बच्चे भी फिर जो है वो वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे। वालिदैन आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते, मियाँ बीवी है तो वो आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते। उसके ऊपर भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार हमें इस तरह तवज्जो दिलाई कि हमारा अपना क्या म्यार होना चाहिए। कि अगर हमारा अपना म्यार ही ऐसा नहीं कि जिसमें हम एक दूसरे की जो है वो इज़्ज़त नहीं करते, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, तो वो किस तरह मुमकिन है कि हम फिर वो तौर तरीक़ जो है वो अपने बच्चों में आगे वो पैदा करने वाले होंगे। तो इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें असूल बताया कि बच्चों की इज़्ज़त की जाए, और फिर फरमाया कि उनको आला अखलाक सिखाया जाए कि you should respect your children and then you should also teach them the high moral. This is what is said by Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well. That you should always, this is the guideline which is provided by Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. फिर आगे एक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में
जो बयान की जाती है उसमें फरमाया कि मन लम यारम सगीरना व लम यारफ हक्का कबीरन फलैसा मिन्ना। बहुत ही खूबसूरत हदीस है। रहनुमा हमारे लिए एक असूल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में अमन व अमान और सलामती हो तो ये फिर आगे जो रसूल ने असूल रखा, फरमाया कि छोटों के ऊपर रहम करो, और फिर फरमाया कि बड़ों की जो है वो इज़्ज़त करो। ये दोनों जो असूल हैं जो बच्चों से मुतल्लिक़ हैं, जो वालिदैन से मुतल्लिक़ हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर फरमाया कि जो इन असूलों पर काम नहीं करता, कि जो शख्स है वो बच्चों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, तो फरमाया कि वो हम में से नहीं। अब इसमें भी देखने वाली बात है कि रहम से क्या मुराद है। क्या ये कि सिर्फ शफकत की जाए, बच्चा गलती करे तो हम उस पर जो है बस उससे प्यार मोहब्बत से पेश आए कि नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं। रहम से मुतल्लिक़ उसके तमाम जो उसको जो दर्जा ब दर्जा आपने उसको तरबियत करनी है, ये वो तमाम के तमाम मदारिज हैं, वो तमाम के तमाम दर्जे हैं जिसमें बताया कि आपने उनके साथ रहम का सलूक करना है, कि उनकी जो है आपने जो दीनी मामलात हैं उसको भी देखना है, उनके जो दुनियावी मामलात हैं उनको भी देखना है, उनकी जो तालीम है उसको भी रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों पर रहम करें। वो ये कि हर मामले में आपने देखना है कि बच्चे की तरबियत जो है वो किस तरह से की जा रही है, कैसे की जा रही है। ये वो रहनुमा असूल है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चों की तरबियत की बात आती है तो हमारे जो है वो सामने रखे। फिर जो सबसे ख़ास बात इन तमाम अवामिर में वो ये कि बच्चों के लिए दुआ करना। जैसे मैंने कहा कि हम बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चों से शफकत और रहम का सलूक नहीं है आजकल के दौर में। इसी तरह एक और जो हमारी कमज़ोरी है वो ये है कि हम बच्चों के लिए दुआ नहीं करते। और हकीकत है कि मैंने खुद देखा है कि वालिदैन जो हैं कि वो बच्चों के लिए जो है वो दुआ नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर बात है पता चलता है कि वो अपने लिए दुआ नहीं कर रहे, तो किस तरह मुमकिन है कि वो अपने बच्चों के लिए भी दुआ करने वाले हैं। सबसे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने जो मज़हब है उसको अपनाया, फिर हज़रत मसीह अलैहि सल्लम के मज़हब को आपका जो तरीका है उसको अपनाया, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत मसीह अलैहि सल्लम की दुआएँ हैं अपनी उम्मत के साथ, अपने मानने वालों के साथ, अपने फ़िरके के साथ, कि खुदा ताला जो है वो ज़िंदा खुदा है, वो उनकी बात को सुनता है। वो जब उसके हुज़ूर दुआ करते हैं तो फिर भी हमारा जो तरीक़ है हम उससे दूर हैं कि हम खुदा ताला के हुज़ूर जो है दुआ करने वाले नहीं। इस पहलू को भी हमें चाहिए कि हम अपनाएं कि अपने बच्चों के लिए जो है वो दुआएं करने वाले हों। और बार बार जो है ये भी फिर इसमें जो अगली जो एक चीज़ आ जाती है कि हम अपने जो उमरा हैं, जो बाज़ या इसी तरह जो मुरब्बियान हैं, उनको तो हम गाहे बगाहे जब मिलते हैं तो कह देते हैं कि जी हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। हज़रत मसीह अलैहि सल्लम ने हमें ये तो नहीं सिखाया कि आपने अगर दुआ करानी, अगर आपने खुदा ताला के हुज़ूर अपना ताल्लुक़ बनाना है तो हम रबियान के पास ही जाएँ तो वही आपको भी बताएंगे, या आप अपने उलमा के पास जाएँ। बल्कि हज़रत मसीह अलैहि सल्लम ने जो दुआ का तरीक़ हमारे लिए खोला और हमें बताया, उसमें तो तमाम कि हर शख्स जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल ऐसे है जैसे बारिश है, कि ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पहले कतरे में बरकत है कि आखिरी कतरे में बरकत है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहीं कहा जा सकता कि कौन वो लोग हैं जो कि ज़्यादा बरकत हासिल करने वाले हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से, खुदा ताला के अहकामात से किस कदर जो है वो बरकत जो है अपने हिस्से में लेने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए जो है वो दुआ करने वाले हैं। फिर आगे जो रहनुमा असूल बताया बच्चों की तरबियत इस रंग में कि उनको नमाजी बनाया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ हमारे सामने है, रसूल इस्लाम का खुलफा का भी आपका तरीक़ हमारे सामने है। बार बार खुतबात की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि नमाज की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए, बच्चों को जो है नमाज के लिए उठाया जाए, उनको नमाज का तरीक़ बताया जाए, उनको बचपन से ही इस बात की आदत डाली जाए कि वो नमाज़ पढ़ने वाले। और हज़ूर ने फरमाया कि अगर बच्चों को अगर बचपन में तहज्जुद की आदत ना डाली जाए तो बाद में उनके लिए इस आदत का या इस आदत पर जो चलना है वो उनके लिए मुश्किल होता है। तो इस तरह भी जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। और वही बात है कि अगर हम खुद नमाजी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो सामने बैठे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो प्रोग्राम पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी भी होते हैं, दुआएं करने वाले भी होते हैं, पर मकसद यही है कि जो बाज़ रहनुमा असूल हैं उनको बार बार दोहराया जाए, बताया जाए, ताकि हम आगे जो है दूसरे अहबाब को भी ये बताने वाले हों, या अगर कोई कमज़ोरी है भी, मुझ में कमज़ोरी है या आप में कमज़ोरी है, तो वो भी दूर हो जाए। इसीलिए तबलीग का भी एक तरीका है, जब हम तबलीग किसी को कर रहे होते हैं, पैगाम पहुँचा रहे होते हैं, तो पहले हम अपने अंदर नज़र दौड़ा के देखते हैं कि क्या हमारे अंदर वो खामी तो नहीं।
क्या हम राह रास्त पे हैं, क्या हम सही तरीके पर अमल कर रहे हैं। हम अगले को तो कह रहे हैं, दूसरे को तो कह रहे हैं, पर क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर जो है बच्चों की तालीम की तरफ जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को हमेशा हजूर जो है बार बार जो वाकफीन है उनको भी इस तरफ आगाह करते हैं कि उन्हें किन किन प्रोफेशन में कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें उनको जाना चाहिए और उनमें जो है तरक्की हासिल करनी चाहिए। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला का हम पर फजल है कि हम हज़रत रसूलुल्लाह इस्लाम को मानने वाले हैं और खुदा ताला ने जो हज़रत रसूलुल्लाह इस्लाम के जो वादे रखे हुए हैं वो भी लाजमी है कि अगर हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को आला तालीम देते हैं, उनको आला मकासद की तरफ जाएँ, उनका रुझान या उनको तरगीब देते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर जो है वो बरकत डालता है और बरकत ज़रूर डालेगा। एक इस ज़मन में जो मियार होना चाहिए, जैसे कि रसूल के ने फरमाया कि शुरू में जैसे मैंने रसूल की हदीस बयान की है कि वालिदैन पर डिपेंड करता है कि उसको क्या बनाते हैं, कि उसको सही बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं या साबी बनाते हैं। तो इसीलिए यहूदियों के बारे में आता है कि अगर किसी यहूदी का बच्चा पानी में, ये एक कहावत है, कहते हैं कि किसी यहूदी का बच्चा पानी में अगर गर्क हो रहा है, कहीं डूब रहा है, तो उसकी माँ जो है कहते हैं कि उसको उल्ट कर गया थोड़ा सा, कहते हैं कि किसी मुसलमान का बच्चा अगर पानी में गर्क हो रहा हो तो उसकी माँ जो है वो लोगों को इस तरह से बुलाती है कि मेरे उस्मान को बचाओ, मेरे खालिद को बचाओ या मेरे उमर को बचाओ। तो कहते हैं कि इसके बरअक्स अगर यही किसी यहूदी औरत का बच्चा गर्क होता या गर्क हो रहा होता तो उसका तरीक़ेकार क्या होता, ये कहती कि मेरे डॉक्टर को बचाओ, मेरे इंजीनियर को बचाओ या मेरे वकील को बचाओ। तो ये तरीक़ेकार है कि उन्होंने शुरू से ही अपने जहन में इस चीज़ की बुनियाद डाल दी, अपने बच्चों के जहन में इस चीज़ की बुनियाद डाल दी कि किस तरफ उन्होंने तरक्की करनी है, क्या उनका मकसद है। तो अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कुरान करीम के ज़रिए हमें जो है आला अखलाक जो बताएँ, कुरान करीम को हमारे लिए बतौर जो है वो हदायत बनाया है। इससे बढ़कर और क्या हदायत हो सकती है। सिर्फ चंद एक जो 10 तरीक़ जो हैं तरबियत औलाद के जो हुजूर ने बयान किए, खलीफा मसीह सानी ने, रसूलुल्लाह इस्लाम ने भी इस जो खुलफा हैं उन्होंने भी इस तरफ जो है वो रोशनी डाली है। तो सबसे पहले फरमाया कि उसमें ये कि जब कोई मर्द शादी करे या इसी तरह अगर औरत शादी करे तो फरमाया कि वो दीनदार या बाखलाक, मर्द के लिए ख़ास तौर पर फरमाया कि अगर वो चाहता है कि उसकी औलाद साले हो, और इसमें भी ख़ास तौर पर हज़रत रसूलुल्लाह इस्लाम ने क्या फरमाया कि सिर्फ नुतफ़ा का निकालना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि मुराद या मकसद जो खुदा ताला ने इसमें रखा है वो साले और आला जो है औलाद के बारे में रखा है कि यानी कि इंसान जो है उसमें नुतफ़ा जो है उसको जो है वो निकाल दे और ज़ाय कर दे। और फरमाया कि इसका जो मकसद खुदा ताला ने इसके पीछे रखा है वो ये है कि आला और साले औलाद जो है वो पैदा हो। तो इसलिए लाजमी फरमाया कि दीनदार और बाख इखलाक बीवी हो। फिर फरमाया कि मजहबी तालीम जो है बच्चे को दी जाए, कि मज़हब के बारे में बताया जाए। फिर फरमाया कि बच्चों की तरबियत वलादत से शुरू हो जाए। हजूर की हज़रत मिनाजुत तालबी जो है हज़रत खलीफत मसीह सानी की, हज़रत खलीफत मसीह सानी की जो किताब है बहुत ही रहनुमा हमारे लिए, मतलब कि उसके अंदर असूल जो है वो बयान किए गए हैं और तमाम जो कि किस तरह से बच्चे की परवरिश जो है वो शुरू से आखिर तक होनी चाहिए उसमें तमाम बयान की गई है। तो उस तरफ ही मैं अब आपको कहूँगा कि वो ज़रूर इस किताब का जो है मुताला करें कि उनकी फरमाया कि वलादत से ही उनकी जो है उनकी पैदाइश से ही उनकी तरबियत शुरू कर दें। फिर फरमाया कि ईमान बिलगैब और अरकान ईमान बताएं कि अगर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको ये बताएं कि हमारा खुदा कौन है, और इसी तरह जो उसको अरकान ईमान है कि अम्बिया पर ईमान और किताबों पर ईमान और बिलगैब पर ईमान। फरमाया कि इस तरफ भी बच्चों को यही वजह है कि बच्चे की जो दिमागी सलाहियत है उसको जो है फरमाया कि बढ़ाया जाए ये बातें बता के। फरमाया कि नमाज का पाबंद बनाएं, माली कुर्बानी की तरफ तवज्जो दिलाएं कि अगर वो अपने हाथ से कुर्बानी करे, अपने हाथ से सदक़ात दे, अपने हाथ से चंदा जाते हैं उनकी अदायगी करे। फरमाया कि शिर्क खफी से जो उसके बारे में भी अपने बच्चों को तालीम दें कि ये तालीम हो कि इंसान ये ना कि ये मेरे वालिदैन की बदौलत है या इस मकसद, या शिर्क खफी यही है कि हम खुदा ताला की ज़ात को छोड़कर हम दूसरों की तरफ जो है उस बात को या उन लोगों के साथ जो है उस बात को मिलाएं कि ये जो मामला है इस बंदे की वजह से हुआ। हमेशा अपने घरों में इन बातों की तरफ जो इसका रवाज है कि ये खुदा ताला ने हमें दिया है, ये घर है खुदा ताला ने दिया है, ये गाड़ी है ये हमें खुदा ताला ने हमें दी है। ये जो जितने भी मुतल्लका चीज़ें हैं वो हमेशा जो उसका रजू है
वो खुदा ताला की तरफ करें कि ये खुदा ताला की ने हमें दिया और खुदा ताला की बरकत है जो हम पर है, इस वजह से कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम खुदा ताला के ज़रूर दुआएं भी करते हैं, हमने सही रंग में जो खुदा ताला का जो इमाम वक्त था उसको माना, और फिर इसी तरह कि हम सही रंग में खुदा ताला के ज़रूर माली कुर्बानी करने वाले हैं। तो हमेशा बच्चों को जो है इस बात की तलकीन और तरबियत करते हैं कि जितना जो कुछ भी दिया है ये खुदा ताला ने हमें दिया है, और इसमें हमारा किसी किस्म का कोई ऐसा वकार या ऐसी बात नहीं कि भी हमने ये जो चीज़ें हैं अपनी किसी जो है ताकत की बदौलत जो है वो हासिल की है। फिर फरमाया कि माँ बाप और बुज़ुर्गों का अदब इन्हें सिखाएं। फिर बताया कि झूठ जो है उससे इनको जो है नफरत दिलाएं कि झूठ नहीं बोलना। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चों के लिए भी खास तौर पे कि फरमाया कि सब 3 ऐसे गुनाह हैं जो खुदा ताला को जो है वो पसंद नहीं। There are 3 evils that Allah the Almighty He do not like them, and one of them is to associate partner with Allah the Almighty. Second is that we are disobedient to our parents and we do not help our parents. And the last part which he has mentioned is to always speak falsehood. If you do so, if you lie, then this is something which is unacceptable before Allah the Almighty. And therefore also the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has also taught us, if we need to attain heaven, and that is under the feet of mother. And he says that if we, again he mentioned that if we wanted to, a person is very unfortunate person that he had his parents in his life and he was not able to attain the heaven through helping them or to serving them. So this is very important as well. फिर फरमाया जो हजूर ने आखिरी जो 10वां तरीक बताया कि बच्चों के लिए जो है वो दुआ करें, और ये वो ज़रूरी रहनुमा असूल हैं जिन पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन पर जो है पाबंद बने और इनको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला और आप सबको भी जो है इन पर अमल करने की ज़रूरत है। बाकी जो सवालात उनके मुताबिक जो है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम देख लेंगे। वो हो गई है बस आगे की नहीं जी आ रही है तो अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today we are here to understand the social evils that are in our everyday life, how we can abstain from them, or how we can better find ways and means to abolish them and tread the path on righteousness. And even most of you probably have already known that in the National Majlis Shura, which will be happening at the end of this month in April, one of the proposals that has been approved by Hazrat Khalifatul Masih Khamis, may Allah Ta'ala be his helper, is that how those vices and social evils which the government gives protection, how our youngsters or how we can help them understand and how we can help them remove those vices in our society. And one of those social evils, if not in today's society, is the social media. As I have given this presentation before in other majalises as well, that those of us who do not know how to use social media correctly, or if we abuse it, then what are the disadvantages in us? So a show of hand, how many of us have some social media account? Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, anything? Right? So a lot of people, of course, many of the youngsters will have them. And I have an article that I did some research on, was done by Forbes on CNN, and it was also done by the Times as well, which help us understand that 6 ways social media affects our mental health. And how, as we know, parents need to be aware of this, that when they get older and older, even myself, when I get older and older, it's hard for us to keep up with, so much technology, hard for us to keep up with too much social media. But if we are not able to keep up, if we do not know what is happening, then how, as Rabbi Sahib mentioned before, how are we supposed to do the Tarbiyat of Allah? How can we make sure that they are safe from that environment? So
in order for our children to be safe, in order for us to be safe, we have to know what the society is going through. And this article was written by Alice G. Walton, who is a psychologist, a professor, a neurosurgeon in medicine, and she says that in many young generation, from the age of 14 to 18 or even younger people, the most problems that were arising amongst youngsters is the lower back pain. And because of this lower back pain is that they are sitting for countless hours on computers, on cell phones, and other media devices for very prolonged activity. And another thing is that due to that, another problem that is rising within the young society is that because when you're sitting for so long, when you're looking and staring at the phone, then you start to develop neck spasm as well. So at that age, if it becomes a big problem when you get older, and if you become prone to it, and if you do not rectify those issues, then once you get older and older, it will become harder for you to get healthy. Then it says that negative effects of social media in young kids and teens, including cyberbullying and Facebook depression. They say that Facebook has one of the highest rates of depression in teen society. So these are a lot of issues that are happening in the society, and as parents and as elders, we need to watch over our kids. As I remember, Hazrat Khalifa al-Masih Rabbi Rahmatullah, when he gave a sermon, and when the rise of internet was there, when people started to have internet, when people started to have this in their homes, Hazrat made it very clear that if you are going to have internet, and if you're going to have a PC, make sure it is in a family room or it is in a living room where the parents can keep an eye on it. But of course, in today's society, it's becoming harder to keep an eye on it, but we can still think of ways and means that we can protect our young children. Another thing is that it says that social media isn't very good for mental health. And then it talks about 6 ways that it is affecting our mental health, and how it is for the young kids, that when they're growing older and older, they're becoming harder to study, they're becoming harder to find jobs. Number one, we all know that it is very addictive. They say that according to this research, it says that people who smoke a pack a day are equivalent to people who use Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram on a day-to-day basis. So if you know somebody who's a chain smoker, you can imagine how hard it is for them to quit smoking, how easy it is for them to become addictive. Likewise, similarly, social media is on the same platform, on the same path of becoming very addictive. Then it says that the next one is that it triggers more sadness and less well-being. We say that we have 10,000 followers, we have 3,000 followers, we have 200 friends and 300 friends. But according to this research, it says that there is a cap that is put in our mental mind, and how much can we understand and how much we can keep up with those friends. So even though it's supposed to make us happy, but eventually, in reality, it does the completely opposite and makes us more unaware of the realistic. So those people who are constantly using social media, who are always together, then another researcher has done is that because when you're talking face to face or having a conversation, they do not know proper etiquettes. How to have a conversation, what are some body languages, when to say hello, when to say goodbye, minor stuff like that. So those students and those youngsters are lacking fundamental human contact, fundamental human conversation. Then it goes on to say that we always have this idea of comparing our lives with others is mentally unhealthy as well. We know that we have a lot of these actors, rich people on social media, and we follow them, and it's a human nature that even today, if somebody has the latest iPhone in this room, it becomes their mental state that I want to have that latest iPhone. Or if somebody is driving a Beamer or Benz or anything like that, as your friends, and you want to have that. So similarly in social media, when you look at all these posts, when you like them, when you retweet them, or when you poke somebody, mentally it is having an impact on your mind that I want to become like them. I want to try to achieve what I don't have. But of course, I'm mentioning all this, and in the later part, I'll mention how Islamically, what are some Islamic ways and means that we can try to tread on the path of using social media appropriately.
Then also it says that it can lead to jealousy and a vicious cycle. Then of course another thing is that you become jealous of that person, and then you can't achieve it. Then you become sad. Then you become more depressed, and then it becomes a more of an endless cycle of feeling jealous all the time. And then it goes on to say that in the end it says more friends on social media doesn't mean you're more social. It just means that you're antisocial in real life. So once again, it says that social media people can't hold. Another research that was done by Times.ca, that those latest doctors are saying that some people who are used to using phones and tablets and all these things, that sometimes they're having difficulties of even holding pencils and pens in their exams or in their classrooms. And then it goes on to say that sometimes when people are trying to sleep in the evening times, we try to use our smartphones, we try to use our tablets and all these things, and okay, I'm going to fall asleep, I'm going to fall asleep. But in reality, it does the completely opposite. So the more usage you have on a smartphone or on these devices, the less you will sleep, and then the less sleep deprived you will be. And then the more patients are going into doctors, and youngsters are saying that I can't sleep at night, I cannot sleep at night, then doctors are prescribing more sleeping pills at a younger age than what they thought they should do. So I just want to take a few more minutes and talk about how to effectively use it according to Islam and according to what Hazur has given us instructions. If anyone remembers when Hazur talked about Facebook when it was first launched, in many of his sermons and his Waqfino class, he said that the main interview when Mark Zuckerberg was interviewed for this launch of Facebook, he said that I want to remove all types of privacy. And that is why Hazur advised youngsters, especially the Lajna members, and them to use social media on a very carefully. That because when you post something, that it becomes a whole world thing that everybody knows that what you're doing, and your pictures become very relevant to everybody as well. And we know that. So now I want to talk about some of the ways that we can use social media correctly. Number one is that sometimes we know what fake news are, whether it is Donald Trump is talking about it, or whether it is Jamaat news. Sometimes in groups we spread rumors that have no authenticity or no background of it. I'll give you an example. A couple of weeks ago or a couple of months ago, somebody posted in one of the groups that a shahada took place in Pakistan. So I read that and I didn't do anything because I know it wasn't sent from Amir Saab or officially from anywhere. It was a random person who put it in the group. And then I looked on Slimuddin Sahib, who is the PR secretary in Pakistan, Rabwa, and secretary of Amur Kharja, Amur Amma. And I looked at his tweet, and for the past 2 or 3 days, he didn't mention anything. And then 2 days later, that person messaged in the group that I apologized for this comment because this actual shahada took place 2 years ago. So you see, but that damage had already been done because so many people took that a message and put it on their accounts and put it on their social accounts, and then from there on it spread. So it's easier to do that. So make sure that if you hear anything or unless officially Jamaat news does not come from your respected Sadr, from your respected missionary, or from your national Amir Sahib, do not post or do not officially give anything that you may have to regret afterwards. Also, that sometimes your local Sadr or your local Qai Sahib sends a memo out via email or via other sources as well. And they also start to post this on Twitter, Facebook, and social media accounts. And Hazur has clearly mentioned to not post official memos of Jamaat on any social media account. So we should also be very careful regarding this as well. And then Hazur also says that a lot of people are starting to have phones at a younger age as well. Now Hazrat Khalifatul Masih Khamis, may Allah be his helper, said that students should not have phones until they graduate from high school. So nowadays when you go to school, as young as grade 7, 8, 6 are demanding phones or even having phones. So as parents, it is our responsibility to act upon this teaching of our beloved Hazur because it has great benefits to it. So these are some of the ways and means that we can allow ourselves to be using phones effectively. Another memo that was given by beloved Hazur a few months ago, that people are having urges to use cell phones even in the mosque. That just before namaz starts, students or youngsters are constantly texting and using the phones all the time. Just last week I was in a namaz center,
and I wasn't leading namaz. I was behind the imam, and there was a young khadim behind me. The namaz started. It went up to Allahu Akbar, and the imam even finished Surah Fatiha, and the person still texting. So you see how important he was. So lost in his conversation that he had no idea what he was doing. So we should. Hazur has said that leave your cell phones at home. If you cannot do that, leave your cell phones in in your vehicles, or if you completely turn them off. And sometimes when the Imam says Assalamu alaikum rahmatullah, right away we grab our phones. This is what he's talking about, the addiction. That we are almost addicted to a person who smokes a pack a day, which is a chain smoker. This is a type of addiction that people are not realizing. So we should be aware of this. We should try to implement these teachings. And as parents and elders who have young kids, we should try to help them and understand them how we should use social media effectively. Otherwise, it can do us more damage than good. May Allah allow me and all the members to use social media in the best possible manner and allow us to use a tread on the path of righteousness and follow the instructions of our beloved Imam. Ameen. Now we will have the presentation by Kadus Sahib, the police officer in Peel region. So as I was talking earlier, today I was asked to present about the most common drug that's known to use in high school and among our youth. And I'm sure you guys, how many people are in high school right now? How many of my brothers? Which one of the drugs that you guys know to like, which is very common in high school and everyone talks about? That's right. Fentanyl is probably the scariest drug that's out there. So, next slide. Sorry. Okay. So what is a drug? A medicine or other substance which has psychological effect when ingested or otherwise induced to the body. How many of my brothers do you know someone who's known to use marijuana or any other drugs? Do you know anyone? Like any of your friends? Doesn't have to be an MD. It's in high school. I had friends who used marijuana, so you guys all know. Okay. And I'm sure all of you know that legalized anytime soon. So July 2018, that's what they're saying will be legalized. So the new laws will be coming out as the law gets legalized. What is marijuana? Marijuana is also called weed, herb, pot, grass, ganja, Mary Jane, and there are lots of slang terms. It's a greenish gray mixture of dried, shredded leaves and flowers of cannabis. Most frequent use like drugs in the world today. So, like I said, in high school, it's very common for you to use this. Where I police, there's lots of high schools in there, and it's very common for parents to call police on their young children, saying that my kid is acting differently. He's not being himself today. There's something about it very common. Usually, like he doesn't behave like that, and when we get there, we know he has done something, but he's always scared to confront in front of his parents. He doesn't want to say, I've done drugs today. Even though it's a peer pressure in high school or something, his friends, he just wanted to try it, and then when he did it, he's not being himself. That's very common. Sometimes people, if it's your first time, most likely there will be more effects than just a normal person that's using it every single day. What are some of the signs and symptoms of this? It's red or bloodshot eyes, a sense of relaxation and happiness,
poor memory, increase of blood pressure and heart rate, decreased coordination, increased appetite, slow reaction time, panic, paranoia, impaired learning skills, and anxiety. These are some of the symptoms and signs and symptoms of this. साइंस को क्लासिक और क्लासिक जी। जी जो कहते हैं अगर आपके बच्चे जो कहते हैं जिसने मेरिजुआना यूज़ की है, जिसे आप कहते हैं गांजा भी कह सकते हैं और कहते हैं वीड भी कह सकते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें जिससे आप देख के कह सकते हैं कि बच्चे ने वो किया है, उसकी ये कि आपकी उनके बच्चों की आंखें रेड होंगी, उसमें से पानी निकल होगा, उनकी आंखें काफ़ी रेड होंगी, एक या दो, एक ही चीज़ें हैं कि दोनों आंखें भी रेड हो सकती हैं या एक आंख हो सकती है, उनके आंखों से पानी निकल होगा, ये चीज़ है। और दूसरा कहते हैं उनको चीज़ें याद नहीं होंगी जो उन्होंने किया होगा। अगर आप उनसे पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, उनको याद नहीं होगा कहाँ से आए हैं, या तो वो थोड़ा टाइम लगाएंगे सोचने में, जवाब देने में कि मैं यहाँ से क्या है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि क्या है, उनकी मेमोरी बहुत स्लो हो गई है। और कहते हैं और उनको भूख, जब ऐसा कहते हैं उनको भूख बहुत लगती है, अगर वो आते हैं वो ज़्यादा, अगर आप देखते हैं आपको हर एक को पता है कि बच्चे कितना खाते हैं, अगर वो ज़्यादा खा रहे हैं इसका पता है कि वो एक ये भी सिम्टम है कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी है कि उन्होंने ये किया है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा भूख लगती है इसकी वजह से। और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि वो पकड़े ना जाए। और वैसे भी सबसे मेन चीज़ है इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। जिस तरह अगर आप लोगों ने सबने सुना होगा स्कंक की जो स्मेल होती है बाहर, स्कंक की और वीड की स्मेल ऑलमोस्ट सेम ही होती है, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। अगर किसी ने की है तो आपको पता चलेगा आपके बेटे ने क्या है, और उसकी वो नॉर्मल एक्ट नहीं करेगा, वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि आपको पता चलेगा कि इसने कुछ ना कुछ रॉन्ग है। और वैसे भी ये बहुत ईजिली मिल जाता है आजकल स्ट्रीट में, किसी से भी मिल सकता है। इसमें कोई कहते हैं इतना मुश्किल नहीं है कि कोई भी जाके ऑनलाइन कहते हैं बाहर जो होते हैं जो बेचते हैं ऑनलाइन सेल करते हैं और आपके बच्चे इजीली इनसे ले सकते हैं, और इसके कहते हैं इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता ये। अगर घर आने से पहले अच्छा खासा परफ्यूम छिड़का हुआ है जी, तो भी समझ लेके कुछ करके आए। स्पेशली जब हम कहते हैं जब हम किसी बच्चे को देखते हैं स्कूल के पार्किंग लॉट में और उनकी कहते हैं अगर 4-5 बच्चे इकट्ठे गाड़ी में है, हमें पता है कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी स्कूल बच्चे 4-5 एक अकेली गाड़ी में कोई अच्छा काम तो कर नहीं होंगे। सो वी अप्रोच देम एंड वी आस्क देम लाइक व्हाई आर यू गाइस हियर, स्पेशली इन अ स्कूल पार्किंग लॉट, एंड दे से लाइक वी आर जस्ट चिलिंग, हम बस वैसे बैठे हुए हैं। बट यू कैन ऑल स्मेल marijuana, हमेशा वीड की स्मेल आती है, उसकी स्ट्रॉन्ग गाड़ी से आती है। और इफ लेट्स से अगर आपका सिर्फ दोस्त, if you see only a friend who's smoking weed and you're in the car, all of you can be charged. So it's not just one person, all of you can be charged because you have the knowledge and consent that the person has a weed on him. So in case if you're like, oh, I didn't know my friend was smoking weed, I didn't know he had weed on him, you did because you were in a car with him. And I will get to that point, like what are the charges and what are the consequences. So what are so marijuana is usually smoked in a joint, pipe, bong, and blunts, but it's sometimes mixed in food, brewed tea, or induce its effect. And usually, sometimes people mix it in brownies, which is probably like lots of you guys know. Like brownies, some people mix weed in brownies as well. Why people use marijuana? आगे बच्चे marijuana use क्यों करते हैं? To relieve stress, anxiety, fear, pain, or anger related to personal, psychological, family issue. ज़्यादातर बच्चे marijuana इसलिए use करते हैं क्योंकि उनको स्कूल की स्ट्रेस होती है, जॉब की स्ट्रेस होती है, या तो भी कहते हैं वो बस they want to look cool. Especially if you have friends who are known to smoke marijuana, they will say, hey, just try it for once, and then it will be good. Like, you know, especially if you want to get into our group, you have to do this. I had friends in high school who smoked marijuana, but they never forced me. They asked me once, I clearly said, hey, I'm 90, I don't want to do this, and especially I want to become a police officer. And they never like forced me. No one will ever force you in here. It's all up to you if you want to do this or not. No one will say, hey, you have to do this. No one will put it on your mouth and be like, you have to smoke this. It's you. You have to make that right decisions. कोई भी आके आपको ये नहीं कहेगा कि तुम ये भी smoke करो. You have to make that right choice, especially in high school. Peer pressure is very common. Like if you want to get along with a group that you feel like is the coolest group in this high school, you will do something like that, which like you shouldn't. And it's also used for medical purposes as well, but I doubt anyone here has any medical reason. If you do, that's the only reason you should be using it. And sometimes people use this to get rid of unwanted situations or feelings, such as if you, like I said, your high school problems, especially when you're in university, you're going through lots of stress. But
that's not the way to deal with it. Smoking, lots of, you'll probably hear from schools to kids too, like, hey, smoking marijuana will, like, then I can focus in class. It helps me focus in class, but it doesn't. When I was in college 3 years ago, I had a friend who smoked weed every single day, every single day. And when I asked him, I was like, why do you smoke weed every day? Everyone can tell because the smell is very strong. Whenever he walked in, you can tell he smoked marijuana. But I asked him, I was like, why do you smoke every day? He's like, it helps me focus in class, which is completely wrong. It's just that he's addicted to it. So in his mind is telling him, hey, you need to smoke weed to focus in class, but that's not true. There's no scientific study that says that if you smoke marijuana, you will stay focused in class, or you will be a bright student. There's no study out there like that. You will hear from your friends, they might be bright, but trust me, that's not helping them to be smartest in class. And the next thing is, what is alcohol? Alcohol is also a drug. It is classed as depressant, meaning that it slows down vital functions, resulting in slurred speech, unsteady movement, disturbed perceptions, and inability to react quickly. So, alcohol तो आपको पता है कि easily कहीं से मिल जाती है, हर जगह stores है, LCBO and beers के stores हैं. इसमें कोई कहती है इसमें सिर्फ age restrictions है, लेकिन आप कहते हैं illegal है, कोई भी जाके लेके जा सकता है. और specially कहती हैं अगर आपके आगे बच्चा को कहता है कि मैं शाम को जाना है बाहर, you want to go out like in the evening, कोई कहता है कि मैंने शाम को 10-8 बजे जाना है, दोस्त की पार्टी है, वहाँ पर लाजमी अल्कोहल होगी. आपको वो बताएगा नहीं, लेकिन लाजमी वहाँ पर अल्कोहल होगी. वैसे भी आजकल पार्टी में लोग रखते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि कहते हैं अगर कोई बड़ा उनको बाय करके दे दे तो वो वहाँ पर होती है. So that's one thing we have to make sure कि अगर बच्चा ऐसी की पार्टी में जाता है, आप उसको खुद ड्रॉप करके जाए वहाँ पर, देखिए कि उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी इन्फ्लुएंस कैसी है. आप वहाँ पर जाएँ, जाके देखें वहाँ पर अल्कोहल अवेलेबल नहीं है, आपको बेशक वहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख के आए कि कहते हैं वहाँ पर कहते हैं ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, and then you can leave. But like I said, alcohol is readily available to everyone nowadays. What are some of the signs and symptoms if you drink? Slurred speech, vomiting, upset stomach, headache, breathing difficulties, disoriented vision and hearing, impaired judgment, decreased perception and coordination, and blackout memories and lapse. And young persons versus adults. Young person body cannot cope with alcohol the same way an adult can. Drinking is more harmful to teens than adults because their brain are still developing through adolescence and well into young adulthood. Drinking during this critical growth period can lead to lifelong damage in brain function, particularly as it relates to memory, motor skills, ability to move, and coordination. According to research, young people who begin drinking before age of 15 are 4 times likely to develop alcohol dependence than those who begin at age of 21. So this is basically saying that it's giving us an age limit where we should be drinking, but for us, it's haram, and as we all know, it's haram in our Jamaat that we should not be drinking alcohol if you're Ahmadi Muslim. We shouldn't even go near them. Why people consume alcohol? The alcohol numbs them various stressor in their life, such as work, school, relationship, and money. The irony is that when people drink too often to cope with their stress, they usually make the problems they're stressed out about even worse, and they cannot develop worse problems like alcohol addiction. You can be addicted to anything, either it's alcohol or weed. Especially nowadays on street drugs, you can never find. So let's just say if you know someone who's known to do drugs and stuff like that, you can never find a pure drug out there. I have been to calls where someone just bought, like let's just say weed or something stronger than that from the street, and they ended up dying from overdose because there was fentanyl involved in there. And as you know, fentanyl is like a drug that can kill you easily. Even if there's like powder in there, and you smell it, you can die from there. It takes like 5 to 6 minutes for a person to die. I went to a call about a month ago. It was a young kid, 22 years old, and bright student. He was a very bright student because we look at their history and stuff like that. Both bright student था. कहते हैं university का था. He was studying something social science or something, and we got a call from her mom saying that my son is not breathing. There's something wrong with him. So ambulance, and we get there. When we get there, he's actually not breathing, but he's red, and we can tell like his eyes were red too. So they're working on him, like what do you call? Paramedics are working on him and everything, but he died because
the mom told us that he smoked weed just prior to that incident, and there was fentanyl in the weed. He didn't get so he bought it from someone off the street, and then he didn't know there was something else in there, and he died from there. 21-year-old, very bright student. He just made a wrong choice, and that's what happened. Because nowadays you cannot find a pure drug out there. Like, you shouldn't be doing it, but I'm just saying, that's one thing that's out there. And we did our investigation and we found out that there was fentanyl in there. And like I said, just inhaling, just smelling it of fentanyl can kill you. So we have to be very careful with this kind of stuff. So how can we preventing drug abuse? As noted previously, early use of drug increases a person's chance of developing addiction. Remember, drug change brains, and this can lead addiction and other serious problems. So preventing early use of drugs or alcohol may go a long way in reducing these risks. If we can prevent young people from experimenting with drugs, we can prevent drug addictions. कहते हैं high school की सी बात करो कि I was in high school 5 years ago, not too long ago, and I had friends जिन्होंने कहा था कि you know what, trying it one time is not going to harm you. You're not going to get addicted to it. He's right. You will never get addicted to it trying once. But why should I try it once? That's something that I don't want to do it. Why even try it once? हम एक दो भी try करने की जब हमें पता है कि जब कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करते जिससे हमारा brain impaired हो जाए, चाहे वो alcohol हो, चाहे वो drug हो, कोई भी हो. और कई लोग आपको ये भी कहेंगे कि weed drug नहीं है, but it is a drug because that impairs your ability to think. What are the laws about marijuana? So the amount of marijuana you are carrying on you is just a significant factor. The more marijuana you have, the greater chance of you will be charged with possession for purpose of trafficking. This is more serious offense than simple possession and has greater penalties. Trafficking is basically the delivery of drugs from one person to person and does not have to be done for the purpose of making money. So let's say if you have drugs on you and they're in small baggies and you're seeing that you're passing drug to someone else, maybe it's your friend, and if a police officer sees you, he's not going to ask you, oh, you didn't exchange money, but that's trafficking. You're giving that drugs to someone else. So you can be charged for trafficking. And having those charges, drug charges, is the worst charge because you cannot travel. It affects, especially if you're going to USA, it will affect your travel purposes as well. Especially if you have charges of like possession of drugs for purpose of trafficking, it's a very serious charge. Simple possession of cannabis marijuana, 30 grams or less, is maximum fine of $1,000 and 6 months in jail, or both for first offense. And possession for purpose of trafficking, cannabis can be more than 3 kg, 5 years or less a day jail time. So like I said, if you know a friend who's known to smoke marijuana, just don't hang out with them. Try to avoid hanging out with them, because like I said, if they were to get caught, you will be charged as well, because you have knowledge and consent. Because if he's smoking it and you can smell marijuana and a police officer gets there, he'd be like, you know what, you're with him. You can smell marijuana. If I can, you can. You had the knowledge to stay away from him. You had the knowledge, and you were smart enough to leave that area, but you didn't. You stood there, especially in a car. Like I said, it's very common for me to go to if we want to arrest kids for using marijuana, we usually go to high schools. That's where they're known to hang around. So they'll be in a car, let's just say 4 or 5 kids in a car together. One person is smoking weed. Other 3 kids are they probably don't even smoke weed, but we arrest all 5 of them or all 4 of them because they were in a car. They knew that he was smoking marijuana, but they didn't leave. They just wanted to hang out with him. So that's one thing that we have to be very careful. Having drug charges on you can affect your future. 100% will affect your future, especially getting a job and stuff like that. And if you want to be a police officer and you get a charge like this, there's no way you can become a police officer. That's just a big no. So हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहते हैं हमारे दोस्त कैसे हैं और कहते हैं हम कैसे लोगों के साथ कहते हैं उठना बैठना है हमारे बच्चों का उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, उनके दोस्त कैसे हैं. जिस तरह मेरी एग्जांपल ये कि जब मैं कहते हैं हाई स्कूल में था, मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे कहते हैं मुझसे पूछते थे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसके पास जा रहे हो, तुम्हारा कौन दोस्त है. मेरे अब्बू ने मुझे कभी 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाने दिया. मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को बाहर जाने दो, लेकिन एक ये चीज़ है मेरे अब्बू ने मेरे हमेशा कहा कि तुम कहते हैं तुम 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे पता था कि 10 बजे के बाद बाहर किसका काम हो सकता है, कौन रात को इतनी लेट कोई काम होता है. यूजली बच्चे एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि मैंने कहते हैं ना काम करने जाना है, ऐसा करने जाना है. अगर जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि कहाँ जा रहा है, उसके कौन दोस्त हैं.
is good. And at the end, if you know someone, if you know an MD brother who's doing marijuana, or someone that you know who needs help, that's the website. It's completely anonymous, so no one will know that you're the user or someone that you know who uses this, and we can always help them. There's always help out there. There's lots of help out there. And that's it. Now we'll have the Q&A session. If one of the volunteers can collect the cards. I have them. You have the moderator So, okay. yeah, I'll just read them Oh out. yeah, you can come up and then you can read them out. Because there are some questions for the mother as well. Okay. If you have any questions, I mean, keep. Yeah, just give it a second. So the first one is, why are drugs legal? There are no legal drugs. So they're saying marijuana is being legalized, but it's only for the purpose. So the reason government is legalizing marijuana is because they want to make money. Because they know kids can get drugs from the streets, and those druggies are making money. So government's like, why not? Why can't we make money from these kids? Why not, like, instead of us just enforcing these laws, stopping these criminals from selling drugs, why not we sell these drugs and make money ours? Because then there'll still be laws. You cannot smoke outside in public. You cannot smoke and drive, and you cannot have, like, there's a certain amount of marijuana you can have on you. So like I said, alcohol is available, alcohol is legal, but you have to stay away from this kind of stuff, which is, like, in our Jamaat, is totally restricted. So that's the only drug that will be legalized, because, like I said, government wants to make money, and that's the only way for them to, like, make money. Is why can't they make money instead of, like, having someone else make money? These people are drug dealers. The bottom line is, there are no legal drugs. There are no legal drugs. See, we also have to be mindful about this, that it should not be why it is legalized. The question should be what is our duty, and what does our faith tells us. Moreover, like when Hazur Anwar, when he was here, and it will also be read to members of the Jamaat as well, he said, like, about 80% of our youth here in Canada is using the drug. And some also said it will be legalized soon. Upon that, Hazur also said that it is already legalized in many other countries as well. It's legalized to use the drug in Holland, but the percentage of membership using it is very low. So this is something which we have to, which should be worried about it. That why is it so that in Canada, especially in our youth, the level of using of drug is so high. And he also talked about many things about depression, but few things that we have come across as far as our youth is concerned is not the depression, is the behavior of the parents in their homes. Because the parents, as I mentioned, they do not respect each other. They use foul language against each other. They do not respect their children. And this is one of the reasons, and as a cause, which our youth is getting involved, because they just wanted to have some kind of peace of mind, and this is why they go out and they use drugs. This is something which is harming our youth, and we need to understand is the duty of the parents to look after these things. And as again, it's a very solid point which is given by Hazur, that a place where it is already legalized, the number of drug use in our membership is low, but a place where it is not legalized yet, the amount is very high. So we should be conscious about it, and we should be mindful on that point as well. Jazakallah. Can we use alcohol as medicine? If that is prescribed by a doctor to a certain amount, whatever is prescribed, this is not that you should use it directly, I guess, but anything in the medication, because we do use the alcohol, so there is no harm in that, and that is upon the prescription which is given by doctor, but not by any person who thinks that it may help him or it might going to help him, so he should just start using it, not upon his own opinion,
But if that is something which is prescribed by doctor, if you would like to share anything. Yeah, no, as of course, if even like Akadusa mentioned, if it's medical purposes, then of course, in order to save your ailment or save you whatever you problem that you have, in order to get it better, then it becomes exempt from other regular users who are banned from using alcohol or drugs in Islam. So unless you have and don't just give one opinion of doctors, just get a bunch of opinion of doctors and specialized doctor to get the best opinion and see whatever is best for you. How long does it take to be in the police force? Like I said, it's different for everyone. So for me, it took me a year. I know some people got in within 6 months. So especially nowadays, there's very limited, like there's very limited spots, and they're looking for. There are so many people applying. So we're looking at 120 positions a year, and 6,000 to 7,000 people are applying. So like I said, if you have great volunteering, for me, I had lots of voluntary hours. I graduated with diploma. So if you have a degree, that's amazing. And like I said, it's anywhere from a year to 2 years. Second question, I think it's been touched on before, but if drugs are harmful, why are they made? For sure, they are made for some other purposes. It's not there are a number of things that this table is here. The purpose is that I can put my hands on it or I can write on it. It does not mean that I should start eating it. So everything has a purpose. If we use any such thing according to the reason that it is made, it's lawful. Anything which is against the nature, against the law of the nature, and we use it, it's not right to do so. So therefore, we do have. It's not that we should blame Allah the Almighty on that. Why did He made it? The reason is that He made it to benefit from it, but not to abuse it or use it another way. This is something, and again, like as we talked about using the drug, and Rabbi Sahib also mentioned that we can also check other doctors as well. We should also check with other medications as well. It's just it's the same tradition of Promised Messiah Islam. According to one of his illness, he was also prescribed to use the weed. No, not weed. No, alcohol nahi kya tha. One drug he was asked to use in his medication, and he denied. And he said, I should try some other medication instead of this. नहीं वो यही था अफीम का, अफीम तो वो उन्होंने उस पर ये भी फरमाया था कि पहले मसीह को तो लोग जो थे वो नशे कहते थे, और जो दूसरा है उसको फिर कहेंगे कि ये अफीम यूज़ करता है. तो इसलिए हुजूर ने इसी वजह से आपने इस्तेमाल नहीं किया और आपने ये लुक्ड इनटू अदर मेडिकेशंस एज वेल. तो ये नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं और वो कहे कि नहीं आप ये ड्रग ले लिया करो और हम हंसी खुशी आएँ वापस के लिए जी हमें इजाज़त मिल गई है. अब रबी साहब ने कह दिया था तो इजाज़त मिल गई है. Yes, as Rabbi Sahib has said, we should always look other options as well. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह फरमाया था कि जो स्नेक का वेनम होता है, we all know कि वो कितना ख़तरनाक होता है, कितना उसका असर पड़ता है. तो हुजूर ने कहा उसमें भी अल्लाह ताला ने एक फ़ायदा पैदा किया है कि उसमें एक एंटीडोट होता है बाज़ बीमारियों के लिए. अगर आप अब रिसर्च करें, अब मैंने 5-6 साल पहले भी मैंने देखा, तो अभी भी न्यू रिसर्च स्टडी करिए कि जो वेनम का जो उसका जो ख़ास होता है वो एक बाज़ बीमारियों के लिए एंटीडोट पैदा किया जा रहा है. तो हमें कहते कि ये भी कैसे थे, क्यों वो सांप ऐसे पैदा किया गया जो इतना ख़तरनाक है कि वो ऐसे काटने से ही बंदा फ़ौरन मर जाता है. तो उसके जो वेनम है, जो स्नेक की वेनम होती है, वो भी आजकल के न्यू रिसर्च के मुताबिक वो एक किस्म की बीमारी की एंटीडोट पैदा कर रहा है. We have a question from the mothers. We always talk about excessive use of devices by children. तो कैसे कि आप डिसिप्लिन हो. If drugs are so bad, why do people say that they give sukoon? किसने कहा? नहीं वो तो बात ठीक है, सुकून तो आता है, पर वो it's not a spiritual sukoon that we are looking for. It's just a sukoon which is for very limited time. So that's one of the reason as well, that it's a limited sukoon. And again, after using it, when it's उसका जो असर है वो खत्म हो गया है, तो वही हालत पे डिप्रेशन की वही हालत में फिर बंदा चला जाता है. तो how can such thing can help you at all? तो सुकून जो है, असल सुकून वही कि जो खुदा ताला ने फरमाया कि अल्लाह भी ज़िक्र लाए तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो खुदा ताला के साथ हमारा ताल्लुक़ है. अगर हम उसकी मोहब्बत की तरफ जाते हैं और do everything positive, then eventually आपको जो सुकून मिलेगा. मगर like even if we talk about doing positive, आप किसी की मदद ही कर दें, जिन्होंने पानी ला के दिया, I hope कि
कि he'll also be happy about it कि भी मैंने जो है ये जो हेड टेबल है उसके ऊपर उनको पानी प्रोवाइड किया। तो ये वो सुकून है, and you can find this सुकून in a very minute things as well। को बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे काम करके आप जो है अपने अंदर जो है ना वो ये चीज़ पैदा कर सकते हैं, एहसास पैदा कर सकते हैं जो खुदा ताला ने और हज़ूर अनवर ने भी कल के जुमा के खुतबे में फरमाया कि जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो उससे मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप जो 24 घंटे आप मसल्ले के ऊपर बैठे रहें, ये कारपेट पे बैठे और सजदों में पड़े रहें। आपकी ज़िंदगी का हर एक पहलू जो है वो इबादत है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इबादत है। आप जो है वालिदैन जो हैं वो बाहर जाके काम करते हैं और अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, वो भी खुदा ताला का हुक्म है, इसलिए इबादत है। माएँ जो है घरों पे खाना तैयार करती हैं बच्चों के लिए और इसी तरह अपने जो है वो हस्बैंड्स के लिए, वो भी इबादत है, क्योंकि वो इसलिए कर रही है कि खुदा ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है कि उनका जो काम जिसको सौंपे गए हैं वो उसके मुताबिक अगर करता है। इसी तरह अगर आप जो है इवन स्पोर्ट्स करते हैं, अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, तो मुझे भी उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो वो भी इबादत है। सो ईच एस्पेक्ट दैट यू लुक इनटू इट इन योर लाइफ कि ये जो काम है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुदा ताला ने मुझे कहा है और ये खुदा ताला के हुक्मों में से है, और 700 अहकामात हैं जो कुरान करीम में है। ये ना मैं बता भी दूँ नंबर जो दिए हुए अहकामात में कुरान करीम के, तो 700 अहकामात को भी देखें। रहीना माला ने जो किताब है उस पर जो है वो पब्लिश की हुई है, उसमें तमाम के तमाम 700 अहकामात जो मिलते हैं, और आप देखेंगे कि तमाम किस्म के जो अहकामात हैं, और देखें कुरान करीम जो किस तरह खूबसूरत तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करते हैं कि ही वाज अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। तो असल मकसद ये है कि जो भी आप काम करें अगर वो इस नीयत से करें कि खुदा ताला का हुक्म है। आप कई हमारे यहाँ पे जो है वो काम करने वाले टैक्सी ड्राइवर्स अगर ये वो समझे कि मैंने सुबह चाबी उठानी और गाड़ी लेके चले जाना है, क्या फ़ायदा होगा उसका? मगर अगर इस नीयत से जाए कि खुदा ताला का हुक्म है कि जो मर्द है उसका काम है कि वो जाके काम करे और अपने घर के लिए जो है कमाए, अगर इस नीयत से आप निकलेंगे तो उसका आपको सवाब भी मिल जाएगा। सिर्फ आपका काम नहीं रहेगा बल्कि वो आपकी इबादत बन जाएगी। माएँ जो है अगर वो अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं और जो है घर का ख्याल रख रही हैं, तो वो अगर इस नीयत से करना शुरू कर दें कि ये खुदा ताला को और करना आपने है ही है। जितने काम है जो आपकी ज़िंदगी के साथ आपके जुड़े हुए हैं आपने करने ही करने हैं, मगर सिर्फ अगर उसके अंदर ये पहलू ले आए कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खुदा ताला ने इसका मुझे हुक्म दिया है, तो इबादत भी बन जाएगी, नेकी भी बन जाएगी और उसका आपको अजर भी मिलने लग पड़ेगा और सवाब भी उसका मिलेगा। तो इसलिए जो भी आपके काम है वो इस गर्ज से करें कि ये खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक मैं कर रहा हूँ। Another question we have from non-Langur is, drugs are not legal right now, but how come you can buy them from stores like dispensaries? They're specifically asking about weed, and the police are not doing anything about it. You cannot just buy them from dispensary without prescription. You need to have a prescription to buy from dispensaries. And like I said, from street you can buy from it's online. If you just go online, you will find people who are selling drugs. And we try to find these people, but it's like I said, as soon as they get out, they will start doing it again. If one stops, that's right. We have to make sure that our kids stay away from this. We shouldn't be looking at why people are selling it, because like I said, alcohol is available outside. You can just go to the store. You just have to be 21 to buy alcohol. But doesn't mean we're gonna go buying alcohol. So same thing for drugs. There are people out there who will sell drugs. People are walking around, they're selling drugs. But we need to make sure that our kids don't buy them. And like I said, getting from dispensary is not without a prescription. You can't just go to a dispensary without. Exactly. So like no matter how many ways there are, it's up to us to stop buying from them, because there'll always be someone or somewhere who's going to dispense drugs. That's right. Just to add on to that, we were always asking why there. In the Holy Quran, we look at the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. That was the darkest age. That in the Holy Quran it says that they were worse than animals, and then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam changed them from animals to human beings, and from human beings to devoted followers. So उस ज़माने में तो इतनी गुनाह थी कि वो apex पे था. It was at its apex. They had drugs, they had alcohol, they had everything you can imagine. That is why Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came. But look at his character. Look at his people that right around him everywhere. People were using drugs, but he did not use them. So we shouldn't blame the society. We shouldn't blame that why is there.
we should look at ourselves and where do we stand, and we have a role model of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have the role model of the Khulafa, right? वो भी इसी ज़माने में रहते हैं ना, वो भी इसी टाइम पीरियड में रहते हैं. तो हमेशा हमेशा अच्छाई की तरफ देखें, जो अच्छे हमें लोग हैं वो इससे भी मिल जाते हैं. वही जो मेरे साथ बताया कि रसूल अस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत तस्वीर खींची, फरमाया कि सदाफ्तम कॉमन क्रॉसन जिल्लतन फजालतम कसबीकतिल इक्यानी, फरमाया कि मैंने इनको गोबर की मानद जलील कौम पाया, और फरमाया कि अपने आपने कुव्वत कुदसी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सोने की डली की मानद बना दिया. हज़रत अली भी उसी माशरे में थे, हज़रत ज़ैद भी उसी माशरे में थे, अबू जहल के बेटा अकरमा वो भी उसी माशरे में था, मगर उनकी मिसालें हमारे सामने हैं. इसी तरह और भी जो है बेशुमार अम्बिया की मिसालें हमारे सामने हैं, दूसरे खुलफा की हमारे मिसालें हमारे साथ हमारे अपने गिरदोनवा में. अब आप देखें कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं. अगर बाज़ दूसरे नहीं आए, किन वजूहत की बिना पे नहीं आए, मगर यही है कि वी डू फाइंड गुडनेस इन आवर सोसाइटी, सो व्हाई नॉट going towards goodness instead of towards evil. Exactly. So in recent times, you've seen that apart from cigarettes, there is an increase in vaping. What's our stance on that? For vaping, is same thing as smoking cigarettes. Just people who are trying to get off smoking cigarettes, they're trying to like stop that habit. They just go on vaping. So, but like I said, you can always find different flavors. So there's also like people who vape marijuana. So you just have to make sure that what your kid is doing. Like I said, there's a different smell of everything. So for marijuana, it's a very strong smell. So you should be able to tell if they're smoking marijuana or if they're just smoking a flavored vape. So like I said, vape is just similar to a cigarette. Pretty much the same Yeah. thing. Just So there's no different difference between vape and smoking cigarette. Exactly. We'll take a question from the mothers. If I find a sign if you find something that is a sign of our son being involved in something, what are some of the ways to deal with it other than prayers? पहली बात है उनको बस मारो मत right away, क्योंकि कहते हैं जो parents का ये सबसे चीज़ होता है, कहते हैं especially with brown parents, when we go to calls and stuff like that, they're very upset. They're like, yeah, how dare you do this, and like I'm sure they got beat up before we got there too. So like I said, just don't do that. That's one thing that you just have to make sure that your kid is okay. So if he needs medical assistance, just call an ambulance, because let's say if they're having trouble breathing or something like that, make sure you take care of that. Then you need to call one of the Rabbiyan and see if you can have a discussion with this. So people that you hang out with, I think that's very common nowadays. Like, well, you gotta stay away from them. So let's say if you have friends that are known to do drugs, just make new friends. Like you can always find good friends. Like I said, I had friends who did marijuana, but they never forced me. So even they smoked in front of me, or like they were there, like they never like, hey, let's smoke this, just try this. It never happened to me. It never happened like that. So you have to find friends that you can trust, and they will like friends that will never force you to do something like this. So that's one thing you can do. And like Murabbi Sahib said, like you can always get help from Jamaat and from outside of Jamaat. So there's lots of help where like government will help you. So there are some like I said, there are clinics that are out there, and you just have to Google everything. So everything is available. Help is there if you need help. So these are the only things. Like I think the biggest thing is your influence, like your friends. इसमें वही है कि जैसे दूसरा ने कहा कि कराची में कौनो मसादिकी के जो सोबत का असर होता है वो बहुत अच्छा असर करता है. तो अगर वो बुरा असर है या नेक असर है तो उस पर भी इंसान से वो अफेक्ट होता है. तो यही है कि आप वालिदैन से है कि वो बच्चे देखें क्या करता है क्या नहीं करता, कैसे जाता है, उसके फ्रेंड्स को देखो. तो तुमसे अव्वल का थी एक हवाला था, एक वालिदैन एक बाप अपने बेटा को लेके आए थे कि ये बेटा जो है मेरा जहरीत की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता. तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का है कि उन्होंने कहा था कि ये इसका देखें इसके दोस्त कौन से हैं, ये कहाँ बैठता है, क्या करता है. तो हुज़ूर ने कहा था कि या अगर किसी स्कूल में किसी के साथ बैठते तो अपनी कुर्सी या सीट चेंज करो. जब उसने कुर्सी और सीट चेंज की तो फिर बाद में हफ्ता या 2 हफ्ते बाद वो वाला दाया करते कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ वापस आ रहा है. तो कहते क्या हुआ, कहते मेरे जो दोस्त के साथ बैठा था वो सारे दहरिया थे और मुझे हर वक्त वो इन्फ्लुएंस करते रहते थे. तो ये हज़रत मसीह मौद की ऐसा की मिसाल भी है. और ये वी ऑल नो कि जो हमारे साथ है, अब जिस फ्रेंड्स के साथ हम जाएंगे, अगर उसको मैकडॉनल्ड पसंद है तो हमें भी मैकडॉनल्ड पसंद आएगा. अगर हमें इसको अल्कोहल पीता है तो हमें भी आहिस्ता आहिस्ता उसका अल्कोहल पीना पड़ेगी. हज़रत मसीह मौद कहते हैं कि अगर आप शराब नहीं पीते और फिर भी आप बार्स में जाते हैं या उधर जाते हैं और आप एक न एक दिन मुतासर होकर अपने दोस्तों की वजह से या माशरे की वजह से आप ज़रूर उसको एक न एक दिन ट्राई करेंगे. तो इसलिए कुरान शरीफ में बार बार जिक्र किया है कुनू सादिकीन के
नेक और पाक लोगों के साथ अपनी सोहबत में रहें. Jazakallah. This next question, from what I understand, I think it's related to bullying. How do you avoid from fighting if they are bothering you? Ask for please. No, I think in school. ठंडा पानी So how to avoid fighting? From bullies, I guess.